अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इंसुलिन के बारे में। पहले टॉपिक में हमने पेनक्रियास के बारे में सीखा। आई होप आप लोगों ने उसको स्टडी भी किया होगा। इंशाल्लाह आज जो कुछ मैं इंसुलिन के बारे में आप लोगों को बोलूँगा, समझाऊंगा, वो भी आप अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंसुलिन। इंसुलिन पिछले टॉपिक में मैंने आप लोगों को ये समझाया कि पैनक्रियास से 4 हार्मोन्स जो हमारे सिलेबस में है निकलते हैं। इंसुलिन, ग्लाइकोगॉन, सोमैटोस्टैटिन एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। आज हम इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। हम लिखेंगे इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन produced by beta cells of pancreatic islets. This insulin is a peptide hormone. What is peptide hormone? Peptide hormone is the hormone made of protein molecules. Simple definition here. Peptide hormone is that hormone whose molecules are made up of proteins. That means this insulin is also a protein made molecule, protein made hormone, and this insulin is produced by beta cells of pancreatic islets. यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बोलना चाहता हूं जो आप पूरे से याद रखोगे और अपनी कॉपी पे उतारोगे। That is, this insulin was the first peptide hormone discovered. फर्स्ट पेप्टाइड हार्मोन जो डिस्कवर किया गया वो था इंसुलिन। Insulin is the first peptide hormone that was discovered, and this insulin is secreted by beta cells. Beta cells already हमने पढ़ा पहले टॉपिक में, and beta cells of pancreatic islets. Islets के बारे में हमने पढ़ा। Islets माने small islands. That's why this insulin is derived from a Latin word insula, that means island, because islets means small islands. That's why this insulin is derived from a Latin word insula, that means small islands. So insulin is a peptide hormone. That means it's a hormone which is made up of protein molecules produced by beta cells of pancreatic islets. That's why this insulin is derived from a Latin word insula, that means island, and also insulin was the first peptide hormone that was discovered. अब हम ये जानेंगे कि इंसुलिन किसने डिस्कवर किया, कब किया और किस एनिमल में इंसुलिन को पहली बार डिस्कवर किया गया। हम ये यहाँ पे जानेंगे और लिखेंगे। 2 शख्स थे जिन्होंने इंसुलिन को पहली बार आइसोलेट और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। वो थे, पहले का नाम था फ्रेडरिक बेंटिंग and number second was Charles Herbert Best, working in
laboratory of J.J.R. MacLeod at the University of Toronto. मैंने आपको बोला इंसुलिन वाज द फर्स्ट पेप्टाइड हार्मोन दैट वाज डिस्कवर्ड, और हम ये भी जानेंगे कि इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन को पहले आइसोलेट किन इंसानों ने किया। मैंने आपको बोला फेडरिक और बेनेटिंग, चार्ल्स हार्बर्ड बेस्ट वर these persons who were working in the laboratory of J.J.R. MacLeod, and this laboratory is present at the University of Toronto. इन लोगों ने, इन दो शख्सों ने इस इंसुलिन को पहली बार आइसोलेट किया। किस जानवर में क्या किया वो मैं आपको अभी बोलूंगा, लेकिन किस यूनिवर्सिटी में किया, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। किस लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी ऑफ J.J.R. MacLeod। अब हम जानेंगे किस जानवर में पहली बार इंसुलिन को आइसोलेट किया गया। हम लिखेंगे आइसोलेट इंसुलिन फ्रॉम डॉग पेनक्रियास 1921. That means insulin was first isolated in dog's pancreas, and the information regarding this insulin was obtained in the laboratory of J.J.R. MacLeod in the University of Toronto. So, pancreas is a peptide hormone, that means it's a hormone made up of proteins secreted, produced by beta cells of islets. And this hormone is the first peptide hormone to be discovered, and these were the persons who discovered this insulin. And these persons discover this isolate this hormone in the laboratory of J.J.R. MacLeod in the University of Toronto, and the hormone was first isolated in dog's pancreas in 1921. That means first insulin that was isolated was dog's pancreas. इन्होंने डॉग के पेनक्रियास से इंसुलिन को आइसोलेट किया और इंसुलिन के बारे में जानकारी हासिल की इस लेबोरेटरी में। गो हेवशेस कि केम को डिस्कवर कायदा को डिस्कवर तो केमिस एनिमल्सन मस आव यु गोनिकले डिस्कवर करन तो कमो को डिस्कवर तो पेप्टाइड हार्मोन कैसे के वस नाव तो बे ओस यो हार्मोन युस जन गोनिकले आव डिस्कवर करन इन केस ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स। अब हम इंसुलिन के बारे में और जानेंगे। What is the function, what is the role of insulin in the endocrine system? That's the important thing. अब हम जानेंगे this insulin, we know that this insulin is secreted by the beta cells. When it is secreted by beta cells वो हम जानेंगे। हम लिखेंगे beta cells are sensitive to blood sugar level, so that they secrete insulin into blood in response to high levels of glucose. हम ये जानेंगे beta cells are sensitive. Sensitive लफ्ज़, sensitive means they get activated. They start releasing this insulin only when the blood sugar level increases. Go, अमुक मतलब गो इंसुलिन छु नेरन बीटा सेल्सो पे तमी साथ यम साथ जन तम साथ जन ग्लूकोज लेवल खूनस मज इंक्रीज गसे. They are sensitive to blood sugar level.
sensitive means they get activated during blood sugar level. ब्लड शुगर लेवल कैसा डिक्रीज के इंक्रीज कब निकलेंगे? ये तब निकलेंगे जब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगी. इंसुलिन only activates, only works when the level of glucose in the blood increases. That means beta cells get activated, they secrete, they release insulin only when glucose level in the blood increases. And also they inhibit the secretion, when blood sugar level becomes low. They inhibit, they stop secreting this insulin when the sugar level becomes normal or it becomes low. So insulin works only when there is increase in the glucose level. When the glucose level decreases, it becomes normal, then beta cells stops the function, stops the releasing of insulin. को इंसुलिन जो बीटा सेल्स पे तमी साथ नेरन यम साथ जन शुगर लेवल खूनस मज इंक्रीज गई येल ये पन्ने पोजिशन पे या ग्लूकोज लेवल कम गो बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीशन स्टॉप कर वन हेचोस कि कर गस सकस लेवल शुगर ये इंक्रीज गस तो तमी साथ ओत नेरी इंसुलिन इस पढ़ो ब्लड शुगर लेवल कजा गस खूनस मज आसिन तमी साथ हेचोस कि तरी फिक्र अम शुगर लेवल कजा गस नॉर्मल आसिन ये वह नॉर्मल खो ज्यादा गस तमी साथ नेर इंसुलिन तमी लेवल वचो क्या गस. अब हम यही पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखिए हम पढ़ेंगे नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल. खूनस मज कजा गस आसिन नॉर्मल शुगर लेवल. अम खतर ज लेवल. अख लेवल गई BSF, that means blood sugar fasting. यह सा लेवल आसन अकिस इंसानस मज ये अख इंसान आस फाकै अम साथ गस लेवल आसन 70 to 100 milligrams per deciliter of blood. The level during fasting is normal in case of healthy adults, that is 70 to 100 milligrams per deciliter of blood. After eating, that is blood sugar random, the level becomes 70 to 140 milligrams per deciliter of blood. That is the level 2 hours after eating. 2 hours after eating. 2 hours after eating, the level becomes 70 to 140. These are the normal levels of sugar in the blood in a healthy adult person. In case in blood sugar fasting, if level increases above 100 milligrams per dl, and in case of BSR, level increase about 140 milligrams per dl, this condition is known as hyperglycemia or diabetes mellitus. This condition is known as hyperglycemia or diabetes mellitus. When blood sugar level increases during fasting and it becomes above 100 milligrams, then this condition is known as hyperglycemia or diabetes mellitus. And in case of random, if the sugar level increases above 140,
This condition is also known as hyperglycemia or diabetes mellitus. And in case of diabetes mellitus and hyperglycemia, insulin is secreted by the beta cells to decrease the sugar level. Concept clear? Blood sugar fasting and blood sugar random, these are the levels. The normal level of BSF is 70 to 100. In case of random, it's 70 to 140. If a person suffering from hyperglycemia or diabetes mellitus, then beta cells releases insulin in order to decrease the sugar level up to 70 to 110 or 70 to 140. Go yeli kis insanas hatu khod bhagay ya khenchan pad akhar tzatji khod zyada sugar level gaise tam saat che beta cells secrete karan insulin in order to decrease the sugar level. ये हो चीज़. अब हम ये जानेंगे अशोश के शुगर लेवल जो डिक्रीज कर इंसुलिन वन समझो वैसे कतकर मैकेनिज्म क्या है कतकर चीज शुगर लेवल डिक्रीज कर हाउ इंसुलिन decreases the blood sugar level. Important point, important topic, ये हम याद रखेंगे. हम लिखेंगे हेडिंग यहाँ पे how insulin decreases blood sugar level. हम लिखेंगे insulin signals or causes the liver to convert glucose into glycogen. Also orders the muscle cells and fat cells take up glucose from blood. पूरा ध्यान रखना कि हम जानेंगे इंसुलिन कैसे ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करता है. You all people know insulin is a hormone. That means it is a chemical messenger. It orders, it sends a message to particularly to these cells, muscle cells and fat cells, to take up the glucose. वो ग्लूकोज जो प्रेजेंट होता है ब्लड में, to take up the glucose from the blood, to store in the fat and muscle cells for the use of energy expenditure. If energy is already present, there is no need of energy, then this insulin signals, orders the liver to convert glucose into glycogen, and this process is known as glycogenesis. This is known as glycogenesis, formation of glycogen. इससे इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करता है. गो अस वुच कि इंसुलिन कथ कथ कर शुगर लेवल डिक्रीज अकिस इंसानस यम सुन शुगर लेवल इंक्रीज आस गोमुत. यह कर डिक्रीज अम खतर वत अख्तियार कर यह फैट सेल्सन तो मसल सेल्सन दपान तुम करो सा सह ग्लूकोज नबर युस जन ऑलरेडी खूनस मन ज्यादा गोमुत सह थो सा पानस मन सह लगे कुन सात एनर्जी खर्चानस मन. अगर वह एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट यह इंसुलिन ऑर्डर दिवन लिवरस सह कड़ सा ग्लूकोज नबर सह ग्लूकोज जन ऑलरेडी खूनस मन सह कर कन्वर्ट ग्लाइकोजनस मज गो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज गो कन्वर्ट अम सत गई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल डिक्रीज इन ब्लड अथ प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस. अम यमु दो प्रोसेसो सु इंसुलिन डिक्रीज करन ब्लड शुगर लेवल. गो insulin decreases the blood sugar level. It orders the
fat cells, muscle cells to take up the glucose from the blood. Also, it causes the liver to convert glucose present in the blood to convert it into glycogen, and this process is known as glycogenesis. ये glucose नेबर चु कारण blood fat कारण चुस convert दबन liver सकर सा convert glycogenous मस अम सचु glucose level decrease गसन खूनस मस कोशिश करन control diabetes mellitus be hyperglycemia. Your important point. Why वुचो इस last point पढ़ो इस कि कूता insulin गस आसुन एकिस इंसान सिंदे बॉडी मस last वाला point. हम लिखेंगे हेडिंग normal insulin level in the human body. In case of fasting, it is 25 milli international units per liter. Eating after 30 minutes. जब हम कुछ खाएंगे 30 minutes after eating, जो हम कुछ खाएंगे उसके बाद 30 मिनट के बाद इंसुलिन की लेवल होनी चाहिए 32 to 30 milli international units per liter. The normal insulin level in case of fasting is 25 milli international units per liter, and after eating 30 to 230 milli international units per liter. That means ये इंसुलिन की लेवल होनी चाहिए एक इंसान में. अब हम रिवाइज करेंगे अपने टॉपिक को. आज हमने इंसुलिन के बारे में पढ़ा. What is insulin? It's a peptide hormone. What's peptide hormone? Because it is made up of protein molecules. It was the first peptide hormone to be discovered. किसने डिस्कवर किया, कहाँ डिस्कवर किया, किस एनिमल में इसको आइसोलेट किया गया, किस लेबोरेटरी में इसके मतलब जानकारी हासिल की, वो मैंने आप लोगों को बताई. फिर हमने पढ़ा इंसुलिन डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल. व्हेन द शुगर लेवल इंक्रीजेस, ये तभी निकलता है बीटा सेल्स से. हमने जाना इंसुलिन किस तरीके से ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करता है. It orders the fat cells to muscle cells to take up the glucose from the blood. It also causes the liver to convert the glucose into glycogen. And the normal blood sugar level मैंने आपको बोली, in case of 110 above and 140 above, this condition known as hyperglycemia or diabetes mellitus. Insulin works only in diabetes mellitus or hyperglycemia. इंशाल्लाह कल हम सोमैटोस्टैटिन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड और ग्लाइकोगॉन के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.